Welcome to Z900 Reasons, 900 Reasons to Ride It, Own It and Experience It. Today's video is all about cleaning the gandagi from our desh. I mean cleaning it from my bike. Monsoon has hit Hyderabad in the month of July, and it is expected that not only my Z900 but any other vehicle will experience this type of gandagi जो झांकने पर भी दिख रही. And mostly this video will be on focusing on cleaning the front drive chain sprocket. So let's take a start in opening this case, which has 4 bolts. एक जो है सो top पे है, and the second bolt will be near the side stand. Third bolt will be at the right side of it, and the fourth one is at the top left, जहाँ पे आप drain pipe हटाने पर देखेंगे. ला हौला वला कुव्वता बिल्लाह थु 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 थु. I did not expect इतना गंदा रहेगा. Although I knew गंदा तो रहेगा, बट इतना ज़्यादा द केस के पास भी आखिर ये गलीज़ था. यहाँ से भी देखे तो पूरा कीचड़ मट्टी चीपड़े पता नहीं क्या क्या है. विच इज़ वाई मेरे को बहुत बेचैनी हो रही थी कि भाई क्लीन तो करना पड़ेगा एक आध बार. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर परचेजिंग द बाइक आई एम क्लीनिंग द ड्राइव स्प्रॉकेट, एंड लेट्स स्टार्ट विद इट. एंड काफ़ी कुछ खटखट लगा हुआ चिपका हुआ भी इस पर, तो लेट मी यूज़ WD-40. तो पहले इस पर ये WD-40 मार के रख दे तो मैं थोड़ी देर के लिए, जितना हो सका निकला तो अच्छा है, घसने कम टाइम लगता. एंड कमिंग बैक टू द ड्राइव स्प्रॉकेट, यहाँ भी आखिरी गंदा है, तो आई एम गोना यूज़ WD-40 टू स्प्रे इट अक्रॉस वेर एवर आई कैन क्लीन द शिट आउट ऑफ इट. एंड भाई WD-40 मार तो दे रहा हूँ मैं, बट इधर उधर जाना भी सही नहीं है. तो आफ्टर स्प्रेइंग WD-40 आई रियलाइज दैट उनको ज़्यादा ही इंजन के पार्ट्स पे जा रहा, क्योंकि इंजन ऑन करने के बाद व्हेन इट हीट्स फ्यूम्स निकलेंगे, विच आई रिकमेंड इज़ नॉट गुड फॉर एनी व्हीकल. ऑल्दो वो फ्यूम्स उड़ जाते हैं हवा में, बट या प्रोटेक्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आफ्टर spraying WD-40, leaving it for a while, I'm gonna use this brush and its strong bristles to clean in depth जहाँ जहाँ तक जा सकता, and remove the कीचड़ out of it. And then a dry cloth to also clean the thing without before spraying the water. Using this spray bottle because I don't have the provision to use a hose pipe with pressurized water to clean the remaining dirt. Once all the patch is done, I will be also focusing on the case which has all the gandagi in it. So finally this is how it looks after cleaning it, and जितना हो सका उतना we have removed. And the casing is also been cleaned बहुत अच्छे तरीके से in my opinion, and दोनों भी मस्त चमक रहे. Now we will be putting the case back. Make sure you put all the bolts back after removing them, and do not over tighten them. लाइट ज़्यादा नहीं रहने से द फोर्थ बोल्ट लगाने थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, नीचे का जो साइड स्टैंड के पास दिख रहा नहीं था. सो हियर इट गोज़, एंड वी विल टाइटन इट, एंड आवर क्लीनिंग जॉब इज़ डन हियर. Another DIY video is done. Thank you to all the pathes who are watching my videos.
In my previous video, I've shared on how to clean the header pipes using Harpic and the most important things to do to avoid rusting. The video link is in the description. Do hit like, subscribe my channel.